Okay. Hello and welcome everyone to another Adda session. And today we have some very interesting topic to talk about and know more about insurance and you, which is very much relevant, important, and has become a core part of our life. One, like whether we want it or not. I mean, given the situations of everything, the world dynamics, how it has changed in past 2 3 years, I think it has become a very integral part of it, and more or less, it has become a very mandatory part of our life. Okay, so we have two respected guest speakers over here with us, Samudra and Samrat. So right now I'll pass on the mic to Ritesh Da, who will introduce them. And over to you, Ritesh Da. Thank you, Rahul. Hello and welcome all the alumni brothers and seniors, dadas. Today is our 19th session of Adda, and we have nearly completed 1 year of this Praktani Adda going on. And we are fortunate to have both Samudra and Samrat, who are 1 year senior to me from 1994 batch, who kindly agreed to speak on this very important topic of insurance. So starting with Samudra, I remember Samudra as a very good football player, if I'm not wrong. So, and we used to watch him dribble with football and do his turns in the fields. So that's one of the very good memories of Samudra I have. But on a serious note, Samudra and I have been talking about this Adda insurance for quite few months, say around 2 months, and he kindly agreed. Samudra graduated from Calcutta University, and he has done a course in travel and tourism. As far as insurance is concerned, his father was in insurance industry, and he worked for United India Insurance, a public sector unit. And Dada himself have been working with quite a few insurance firms, including SBI, Max, Bupa, LIC, New India. In fact, I'm talking to him, I'm taking his help to extend my home insurance and my medical insurance also. And he has been very helpful. Any questions, you wait for half an hour, he comes up with all the options you can have, which is best tailor-made for you. So thanks, Samudra. Thanks for all the help. Coming to Samrat, again, he's one of our seniors, just 1 year senior to us. And he did his MBA from Institute of Rural Management in Jaipur. Samrat, as you know, I am from Institute of Rural Management, Anand, not Jaipur. And in terms of profession, he has been in insurance industry since 2004. So quite a bit of experience, I would say 17 years. And I hope he's going to give us a good background of the insurance industry. Apart from that, he is, as I read, he's very much passionate about quizzing, and he himself is a quiz master, and he has managed to conduct around 300 quizzes. At present, he works for ICICI Lombard, and he heads the SME digital business of Lombard. That's all from my side. Gentlemen, Samrat and Samudra, on to you. Thank you. Hey, thank you, Ritesh, for the lovely introduction. So Samudra and me, we both will take the session. I'll start with some facts about insurance and some trivia about insurance, because insurance is still a jargon for a lot of people. So I'm sure we all have heard about insurance from our parents when we were small, and the first with the insurance first happened when we joined our first job. So somebody suggested us to do insurance. So let me talk about how insurance started. Ritesh, if you can just present the screen if possible, because I have joined from my mobile. So I'll tell you about the history of insurance, how the concept of insurance works. So concept of insurance is as old as the human civilization.
But if you look at the basics of insurance when it started during uh, actually Alexander's time. Napoleon also did it during his time. Alexander, started the basic concept of insurance. So the modern concept of which we know today was initiated by Alexander, 5,000 years ago, when he used to go and conquer territories. His soldiers who used to get killed, so he used to pay in kind or in cash at the time to the deceased family members of the soldiers. So that is how the basic concept of insurance, modern concept of insurance came in. And if you look at the insurance, even the concept of insurance is mentioned in our holy scriptures, in our Hindu dharma. The modern concept of insurance, as we know today, started in 16th century in Europe, post you know industrial revolution, revolution which took place in England. It was in Lloyd's, a famous coffee shop, where a lot of people used to discuss about their voyages or the transit which used to happen. That's where the Lloyd's in England, it's called as the birthplace of modern insurance. Until today, a lot of concepts of marine insurance, is still taken from Lloyd's in England. Now, if we look at insurance, facts and a few trivia which I wanted to share, which with respect to India. So India was, the modern insurance was not available to India till early 1800s. So 1818 was the first time when insurance company came to India. That was started by Britishers, for Britishers in India. And that was Oriental Life Insurance Company, the first European company which came up in Calcutta. In Calcutta, as you know, was the nerve center for British, hegemony in India. In 1870, the first insurance company that came in Bombay, which was Bombay Mutual Life Insurance Society. It was the company who started insuring Indians at par. Earlier, Indians were considered as substandard lives and compared to Europeans or the Britishers, and our charges for Indian lives were very high. So in 1870, the first insurance company for Indians, which started, was Bombay Mutual Life Insurance Company. As you know, in early 19th century, we had a lot of developments in India. Bengal partition in 1905, the Swadeshi movement thereafter. So one interesting bit of trivia was during the Swadeshi movement. As we all know, Jora Sako, the famous, house of Rabindranath, as it is called, in his room, there was an insurance company which started, which is called Hindustan Cooperative Insurance Company. So that's a small trivia which I wanted to share. And Britishers wanted to regulate insurance, British Indian government at the time. So in 1938, the first Insurance Act was enacted in India. And today, whichever insurance we follow in India, we still follow the Insurance Act of 1938. And whatever new laws are passed is again amendment of that very old Act of 1938. Life insurance was nationalized on 1st September 1956 after a lot of efforts by then Finance Minister Mr. Deshmukh, C.D. Deshmukh, along with Mr. Firoz Gandhi, who fought against corruption in insurance. So at that time, there were around more than 150, Indian insurance companies and 16 plus non-Indian insurance companies and other provident societies were operating in India, and all these were nationalized to form LIC as we know today. And if you look at the facts about general insurance, first general insurance company was Indian Mercantile Insurance Company that set up in 1907, which is around 113 years ago. That started in India to operate general insurance business in India. But one interesting fact was Tata Group, as we know, has been the pioneer in a lot of business fields. So Sir Dorab Tata, son of
the founder of Tata Group, Jamshedji Tata, founded New India Insurance Company in 1919, and which is presently in his present avatar known as New India Insurance Company, which is India's presently the largest general insurance company. So again, like life insurance, general insurance industry was also, Indira Gandhi wanted it to be nationalized. In 1972, General Insurance Nationalization Act was passed. And on 1st September 1973, all the 107 general insurance company were amalgamated to form 4 general insurance company, PSU general insurance company as we know today, which is New India Insurance Company, National Insurance Company, Oriental Insurance Company, and United India Insurance Company. But again, post liberalization of 1991, so insurance was seen to be a sector in India which was not well penetrated. But we wanted, government wanted it to, that should penetrate more, because the penetration of insurance was less than 1% at the time. So Malhotra committee report in 93 suggested privatization of insurance, and thus IRDA was formed in 1999. And from 1st April 2000, industry was privatized. IRDA was formed as a regulator for this industry. And post that, IRDA started giving license to a lot of private insurance companies. So as we stand today, we have 24 life insurance companies operating in India and 33 non-life insurance companies operating. Out of 33, 5 would be health insurance, standalone health insurance company like Star Health Insurance, or Aditya Birla Health Insurance, or Max Bupa, which is Niva Bupa now. And we have 2 specialized insurance companies, which is Agriculture Insurance Company and ECGC, export, which is related to exports. If you look at the penetration of insurance, which was less than 1% during early 90s, it rose to 3.7% of the as a part of GDP as we stand today. But still, we are way to go, because if you look at the world average, it's around 6.31% of the GDP. So if you look at the developed countries like US, it's more than 11%. If you look at South Africa, it's around 18%. In Japan, is the highest at 22%. So India is still a long way to go. But the penetration of overall insurance penetration, if you look at, it's roughly around 7%, which if we exclude government initiatives. So government initiatives are, as you know, Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana and all other health insurance started by our government. So if you look at those as a penetration, then penetration might go to around 10 to 12%. But if you look at plain individual insurance, then it's not more than 7%. So that's the status of penetration of insurance. But when you talk about insurance, we wanted to know why it is important. That's the main question, right? I'm sure a lot of you folks, or all the seniors or dadas and brothers must have seen a lot of agents coming to your friends, cajoling you to buy insurance, either to save tax or as an investment protection. So if you look at life insurance is a plain risk protection tool. However, a lot of insurance companies sell life insurance as a investment product. But the way we have been accustomed to and we have been conditioned over the years by LIC was insurance is taken as a tax saving device rather than a risk mitigation tool. So the basic importance of insurance, if you look at it, it's a risk mitigation tool which helps you to mitigate risk against human life for life insurance, or for any financial loss against any non-life products, be it a car or a bike or a house, or maybe say health, if it's health indemnity. Plus, it's a social protection. In India, we don't have social protection as strong as European or America or in US. So insurance becomes a social protection tool, in a country like ours. Plus, moreover, it's an industry in itself which generates a lot of employment. If you look at direct employment in insurance, I'm sure it has more than 2.5 lakhs people employing directly in insurance, and overall indirectly it will be roughly around 25 lakhs, including the agents. If you look, LIC has around
has got around 20 lakhs odd agents, plus private insurers would be having around 5 to 7 lakhs agents. Roughly around 3 million people are indirectly associated with insurance, and a lot of other service providers of insurance also get dependent on this industry. And moreover, it becomes a career options for various people. People like me and Samudra, who has been associated with insurance for last 17 years. And it also helps in the economic growth, as I had mentioned earlier. So I won't take much of a time. So this is all about insurance, which I wanted to speak. Then I have Samudra, my classmate from 94 batch. We'll talk about the products of insurance and how insurance is distributed in India, and and how we can help you to achieve your financial freedom in terms of buying insurance. So over to you, Samudra. Good evening. Thank you. Initially, first I will thank Ritesh. Ritesh, the month of might be November or something like that. So he told me, Samudra, why you are not taking one session? It will be of immense help if you can please do. So ना बोलने का कोई चांस ही नहीं है. रितेश ने हमको ऑफर किया है, तो आई एम ग्रेटफुल. आज सबके सामने इसको लेके बात करेंगे. सम्राट, मैं और सम्राट एक ही दिन में विद्यापीठ में हम लोग का एडमिशन हुआ था. विज्ञानंद धाम में साइड वाला रूम में एकदम बगल वाला बेड भी हम लोग का था. तो बहुत अच्छा दोस्त है हम दोनों. तो हम सम्राट से कनेक्ट किए कि सम्राट, रितेश ने हमको बोला कि एक सेशन लेने के लिए, तो तुम भी आ जाओ. तो he was gladly accepted that. बोले कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा. थैंक यू सम्राट. एंड आज उसका घर में काफी गेस्ट भी आया हुआ है, तो फिर भी थैंक्स फॉर गिविंग a wonderful and precious time for that. Now come to the business. Actually सम्राट ने इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस तो काफी हद तक बहुत कुछ शेयर किया है. मेरे को जो इंश्योरेंस के बारे में जो बोलना है, इट्स वेरी इजी एंड कॉमन. द थिंग इज, हम लोग तो सबको इंश्योरेंस तो करते ही हैं, लेकिन बिसाइड दैट ऑल्सो कुछ थिंग ऐसा है कि जो हम लोग लैक करते हैं, हम लोग ज्यादा में उसमें ध्यान नहीं देते हैं. खासतौर से हम लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वी यूज्ड टू टेक द हेल्थ इंश्योरेंस. Then for tax savings, yes, what Samrat was saying, for life insurance, we used to take life insurance. There are few motor insurance also. So actually we do have some other type of insurance which will always help us. Just like few I'm mentioning, like we have got some products from company like cardiac policy. Then we have some product like diabetic policy. There are some special child policy. जो लोग स्पेशल चाइल्ड जो होता है, उन लोग के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी होता है. देन वी हैव लाइक कैंसर केयर पॉलिसी. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉलिसीज है जो हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है. खासतौर से हम लोग से लाइक हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा डिपेंड करते हैं. फिर मैंडेटरी प्रोडक्ट जैसे रह गया कि मोटर इंश्योरेंस, तो वो तो करना ही होता है. तो यही हमको अवेयर करना है कि ये सब इंश्योरेंस छोड़ के जो हमने बताया कि उसमें भी हम लोग अगर थोड़ा देखेंगे, उसमें भी बहुत सारे अच्छा पॉलिसीज है. जैसे इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ लाइक कैंसर पॉलिसी. कैंसर पॉलिसी ऐसा अभी बहुत सारा, देयर आर मेनी कंपनीज, दे आर ऑफरिंग लाइक कैंसर पॉलिसी की अभी से तुम पॉलिसी ले लो. इफ देयर इज समथिंग, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, से लाइक किसी को कैंसर अगर हुआ है, तो दे विल गेट अ गुड लम सम अमाउंट फ्रॉम द कंपनी फॉर द ट्रीटमेंट. दैट इज एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस. बट द थिंग इज, हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे सम्राट ने बताया, स्टार हेल्थ के नाम, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसमें कि जिसको ऑलरेडी कैंसर हुआ है, like in the initial stage, they are also entitled to get a policy. ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर नहीं, लगभग हर कंपनी अगर
कैंसर किसी को हो जाता है तो पॉलिसी देता नहीं है उसको। तो वी डू हैव अ पॉलिसी समथिंग लाइक दैट कि इवन किसी को अगर कैंसर हो भी गया है इन द अर्ली स्टेज, then also he or she can get a policy from the company. And the most vital thing, agar insurance is all about protection, as we know, to protect our family, to protect ourselves also, I would highly recommend about the term insurance policy. I hope we have got now 12 participants. मेरे को जो 11 participants, I hope everybody has got that one term insurance, which is really very beneficial. टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम आता है। जनरल लाइफ इंश्योरेंस हम लोग जो करते हैं उसके हिसाब से टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही समथिंग इज डिफरेंट एक्चुअली। you will only get the, not you, your nominee will get the money after the death. तो उसमें होता है कि एक लमसम अमाउंट हम लोग का आज एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी में इफ आई टेक कवरेज ऑफ 50 लाख तो उसमें हम लोग को बहुत सारे प्रीमियम देना पड़ता है क्योंकि वो उसमें रिटर्न भी आता है। लाइक दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मोड इंश्योरेंस जैसे हो गया। लेकिन टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जिसमें फैमिली को एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है आफ्टर द डेथ। एंड डेफिनेटली वी ऑल लव आवर फैमिली। अगर आज हम नहीं रहे, मेरा फैमिली ठीक से प्रोटेक्ट हो जाए, एक गुड अमाउंट से प्रोटेक्ट हो जाए, यही हम लोग का उम्मीद रहता है, हम लोग वही कोशिश करते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड ईच एंड एवरीबडी कि एटलीस्ट टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस। और अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें, उसमें भी टर्म इंश्योरेंस बहुत फायदे वाले हैं। जैसे कि लेट मी टेल यू, somebody in a age of 35, ठीक है, somebody in a age of 35 अगर 1 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, उसका प्रीमियम करीबन आ जाता है 30 to 35,000 ओनली। So if I take a 30,000 and if he pays the premium till 60 of his age, so like 25 years into 30,000 means only by investing 7.5 lakhs, and it's a guaranteed return. Definitely after death, his or her nominee will get the amount. But just think about the return. Just by investing 7.5 lakhs, that even in a long 25 years, if something goes wrong, then at least I can protect my family with a good corpus. I think one crore आज के दिन में ठीक है, अच्छा मनी है। जैसे लास्ट ईयर we lost one of our batchmate, and later on I came to know that there was a protection of 1 crore for his family. So just think, जो चला गया वो तो ठीक है, लेकिन वो कुछ अपने फैमिली के लिए, अपना वाइफ, अपने बच्चे के लिए कुछ बिल्ड भी करके गया, ताकि उस हिसाब से मॉनिटरी प्रॉब्लम ना आए, एंड दैट इज द मेन थिंग। So I will highly recommend each and everybody. And टर्म इंश्योरेंस अभी प्रीमियम उसका भी बढ़ रहा है फॉर दिस कोविड रीजन से। लाइक इन लास्ट 2 years 3 बार टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है। फ्रॉम लास्ट दिसंबर ऑनवर्ड्स ऑल्सो हर कंपनी का प्रीमियम बढ़ते ही जा रहा है। तो मेरे को यही कहना है कि जिसका सेहत अभी सब ठीक ठाक है, I would highly recommend each and everybody to take a term insurance. और टर्म इंश्योरेंस डे बाय डे इट इज गेटिंग टफ ऑल्सो। आज से 2-4 साल पहले टर्म इंश्योरेंस कोई भी ले लेता था, लेकिन अभी किसी का अगर हेल्थ का कुछ इशू आ गया तो कंपनी अभी टर्म इंश्योरेंस नहीं दे रहा। तो जितना कम उम्र में प्रीमियम भी बहुत कम पड़ता है। There are protection till 100 years, there are protection till 85 years, 80 years, so there are many slabs.
तो एटलीस्ट टिल 85 protection, we should take a protection till our age of 85. That is the thing. And now coming towards the health insurance, दो तीन चीज ऐसा होता है कि I talk to many persons, they used to say कि yes, I do have a protection from my company. अच्छा प्रोटेक्शन है मेरा कंपनी से, मेरे को इंश्योरेंस नहीं लगेगा, लाइक सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को अभी नहीं लगेगा. बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू ईच एंड एवरीबडी कि अपना पर्सनल एक हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस से कवरेज तो मिल जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कल हम किसी वजह से नौकरी छोड़ दिया या अगर कुछ हो भी गया और 4-5 मंथ बाद फिर हमको एक नौकरी लगा, बट इन दैट पीरियड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एंड इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो एक पर्सनल अपना फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कोई सोचते हैं कि ठीक है रिटायरमेंट के टाइम जैसे हो, जब कंपनी का नहीं रहेगा तब हम लोग कर लेंगे एक तो तब कर. बट द थिंग इज, अभी अगर आपको कोई डिजीज आ गया तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है उस डिजीज की वजह से आपको पॉलिसी बाद में नहीं मिलेगा. एज वी ग्रो ओल्ड डिजीज हम लोग पे और आ जाता है, तो जितना जल्दी हो सके अपना फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस वी कैन टेक दैट in few parts also, like if we have a basic health insurance of like 15 lakhs 20 lakh 25 lakh, और उसका ऊपर अगर और 20-25-50 लाख का एक टॉप अप ले लेते हैं तो उसका भी बहुत कम प्रीमियम आता है. फॉर एग्जाम्पल आई से somebody say like husband wife and child is having a insurance coverage of 5 lakhs in health insurance I'm talking about. So on an average you have to pay a premium of say like 15 to 17,000. उसके साथ the thing is, अगर कोई 25 लाख का कोई टॉप अप ले लेगा तो देखा जाता है कि उसका प्रीमियम आता है सिर्फ 7 to 8,000. तो एक साथ बहुत सारा मतलब बेस पॉलिसी 50 लाख 1 करोड़ भी कर सकता है कोई, या उसको स्प्लिट कर सकता है कि एक बेस पॉलिसी भी मेरा हो गया और ऊपर से मैं एक टॉप अप भी ले लिया, तो वही बहुत ही फायदेमंद रहता है हेल्थ इंश्योरेंस पे. तो मेरे को कहना है कि सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस अपना, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग कवरेज फ्रॉम कंपनी, सबको एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए. और आज के दिन में देयर आर few companies like let me tell you about Niva Bupa. They are offering policy for our elders also, like somebody in 60s 70s 80s even till 100 years they can get a coverage. तो ऐसा होता है कि हम लोग का बहुत सारा, हम लोग का फादर और मदर का पॉलिसी नहीं है. पहले ऐसा था कि 60 के बाद या 65 के बाद पॉलिसी नहीं मिलेगा, या तो अगर पॉलिसी मिलेगा उसमें कुछ कोपे रहता है. For example, say if I talk about Star Health for the senior citizen policies, there you have to pay a copay of 30% of the total admissible amount. तो वैसा पॉलिसी भी है, और ऐसा पॉलिसी भी है कि जिसमें आपको कोई कोपे का को देने का दरकार नहीं है. द एंटायर अमाउंट विल टेक केयर ऑफ द कंपनी. तो फादर और मदर के लिए डेफिनेटली आज काफी कॉस्टली हो गया, और खास करके कोविड के बाद वी हैव गॉन थ्रू मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे एक एडमिशन में कम से कम 7-8-10-12-15 लाख रुपया खर्चा हो गया. देयर आर मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस. तो वही कहना है कि एटलीस्ट वी शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन हेल्थ वाइज. हेल्थ का खर्चा हर साल बढ़ते ही जा रहा है. लेट मी टेल यू वन थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में आया है इन 1986. एट दैट टाइम माय फादर वाज अ ब्रांच मैनेजर. तो मैंने खुद पापा को देखे हैं कि इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कि एक ले लो, नया आया है, अच्छा है, अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो खर्चा.
So at that time, if somebody is having a protection of 50,000, that was enough. But like ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी उस समय बिकता था लाइक 25,000 का, 50,000। उस समय अगर कोई 1 लाख का पॉलिसी ले लेगा तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो डेज आर चेंजिंग, थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉस्टली। सो आज के दिन में आई वुड सजेस्ट कि कम से कम एक फैमिली का 20-25 लाख का मिनिमम टू स्टार्ट विथ। से if I say कि I am in like in mid-40s now, and say if I consider for another 25 years, we don't have any idea कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये खर्चा कहाँ तक जा सकता है। तो ऐसा होता है कि बहुत कोई ना 5 लाख का पॉलिसी ले लेता है, बोलता है कि मेरा पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आफ्टर 5 years और से 10 years, वो 5 लाख फिर वो 1986 का 50,000 के जैसा ही हो जाएगा। तो जितना तक यू आर हेल्दी, योर फैमिली इज हेल्दी, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कवरेज। बहुत कोई सोचता है कि हम बाद में इसको बढ़ा लेंगे, लेट मी स्टार्ट विथ 5 lakhs और 10 lakhs, और फिर 2-3 साल बाद जाके उसको बढ़ा के और 5 लाख बढ़ा लेंगे या और 10 लाख बढ़ा लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट माइट हैपन कि आफ्टर 2-3 years ऐसा कोई बीमारी आ गया जिसमें कंपनी इज नॉट अलाउइंग यू टू एनहांस। वेरी रिसेंटली one of my client, I told him regarding the top up policy। तो मेरा क्लाइंट का जो वाइफ है उसका 2 साल पहले एक ऑपरेशन भी हुआ था, एडमिट भी हुई थी, और उसका ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड समथिंग उसमें हुआ था। तो क्या हुआ, कंपनी ने अभी उसको रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं अब इनका अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो what I suggest to that person कि better you enhance for you and your daughter। तो वही होता है कि आज उसका और उसका बेटे का तो हम बढ़ा दिए, लेकिन उसका बीवी का बढ़ा नहीं पाए। यही होता है कि अभी हम लोग सबको ही सोचते हैं कि ठीक है एक छोटा सा ले लेते हैं, वो रह जाएगा, बाद में हम बढ़ा लेंगे, देख लेंगे। तो क्या होता है कि बाद में बहुत समय ऐसा होता है कि कंपनी रिफ्यूज कर देता है कि if some disease gets into you। And also in talking about term insurance also, it is always beneficial to take as early as possible। जितना दिन हम लोग का सेहत ठीक रहेगा, हम लोग ठीक मतलब फिजिकली वी आर फिट। आज के दिन में इट्स रियली गेटिंग टफ टू गेट अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर किसी का देखा जाएगा कोई बीमारी ऑलरेडी इज एग्जिस्टिंग, एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और समथिंग लाइक दैट, द कंपनी अभी उन लोग को पॉलिसी नहीं दे रहा है। तो थिंग्स आर गेटिंग टफ डे बाय डे। तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द जैसे भी हो अपने को और अपना परिवार को थ्रू इंश्योरेंस प्रोटेक्ट कर लो। और ऐसा बहुत समय बोला जाता है कि ये एक बात है, सम्राट जैसे बोला था कि हम लोग टैक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के हम लोग LIC करवाते हैं। फिर एक बात ऐसा होता है कि नहीं अभी LIC में उतना रिटर्न नहीं है। सी द थिंग इज अभी मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ गया जो आज से 15 साल 20 साल पहले नहीं था। टॉकिंग अबाउट 15 years बैक या 20 years बैक, उस समय हम लोग पापा को जो देखते थे, एक LIC करवाता था, एक बैंक में FD करवाता था, कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ करवाता था, बस दैट्स एनफ। और अगर प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट। लेकिन आज के दिन में देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, बट देन अगेन ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस स्टिल आई वुड रिकमेंड टू गेट फ्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड फॉर द फ्यूचर। लाइक मेरा बच्चा का हायर एजुकेशन या उसका शादी हो या पोस्ट रिटायरमेंट हो, भले ही हो सकता है कि आज 2 पैसा इन कंपेरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स कम होता है, लेकिन ये भी एक होता है कि एक गारंटीड रहता है कि डेफिनेटली टुडे इज 2022 से आई नीड अ गुड अमाउंट इन द ईयर 2035, आज से 12-13 साल पहले। तो क्या है कि कंजर्वेटिव सोच से हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट ये तो आएगा जरूर,
there are many instruments in the market, and it is always beneficial to invest in all the basket. थोड़ा थोड़ा करके सब हम म्यूचुअल फंड में डाल दिए, सब हम अपना प्रॉपर्टी खरीदने में लिए डाल दिया, ठीक है, उन लोग का रिटर्न बहुत अच्छा है, ये आई ऑल्सो नो दैट, बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि आज even if I take a coverage of 10 lakhs and by paying premium of like 40-50,000 60,000 आफ्टर 2 साल, अगर मेरे को कुछ हो गया तो उसका रिटर्न जो आएगा वो म्यूचुअल फंड से भी नहीं आता है, वो कोई प्रॉपर्टी से भी नहीं आएगा. सो टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ थोड़ा. और एक चीज इंश्योरेंस में है, अभी लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न्स जो है, डबल बेनिफिट जो है, ऑल आर टैक्स फ्री. तो देखा जाएगा कि आज हम 2 रुपया कहीं पे लगाएं, 10 साल बाद हमको वहां से 10 रुपया आया, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 10 रुपया आने से वहां से फिर तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस द रिटर्न इज टोटली टैक्स फ्री, दैट इज हाईली बेनिफिशियल. तो सब अगर देखा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना उतना ये नहीं रहेगा, फायदेमंद रहेगा, इस उससे अच्छा है हम ये पैसा अगर उधर लगाएंगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स लेंगे, तब उसमें ज्यादा फायदेमंद. हाँ ठीक है, हम मानते हैं उसमें ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा, लेकिन ऐसा बात भी नहीं है कि इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा. अब लास्ट 2 साल में हमने खुद देखे हैं, बहुत सारे मेरा क्लाइंट्स जो है, जो आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले, 12 साल पहले एक LIC, छोटा LIC कर रहा था, प्रीमियम दे रहा था साल भर 10,000 15,000, उसका बहुत बेनिफिट आया पिछले 2 साल से, बहुत बेनिफिट आया. ऐसा बहुत सारा क्लाइंट्स है जिनको बोलना है कि हमको बचा दिया LIC ने. तो यही बात है कि इंश्योरेंस को थोड़ा इसके बारे में सीरियसली सोचना है, और अपना फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन हो सकता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आज मेरा एक नीड है, हो सकता है रितेश का दूसरा एक नीड है, राहुल का दूसरा एक नीड है, बट द थिंग इज इट्स बेटर टू फाइंड द नीड personally and at least to invest something in insurance. So this is the thing what I will say to you. And finally, what I would like to say is how I can be helpful to you all. As I discussed with Ritesh also from the day one, हम लोग का विद्यापीठ का जो एलमनी है, उसमें क्या है कि उसको आगे बढ़ाना, एलमनी से किसी को हेल्प करना, जो भी करना है उसमें एक पैसा का ही जरूरत होता है. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू डोनेट समथिंग फ्रॉम आवर इनकम. ये प्यार से हम लोग करते हैं कि मेरा विद्यापीठ है, आज इसमें कुछ अगर हम डोनेट करेंगे, किसी का काम में आएगा, कोई भी काम में आएगा, तो अच्छा भी लगता है. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, लेट मी टेल यू एवरीबॉडी, कि अगर मेरा आर्केमाइट्स जूनियर सीनियर जो भी हो, कोई हमसे अगर कोई पॉलिसी करवाता है, तो मेरा जो इनकम रहेगा उसमें से 25% आई विल डोनेट इट टू विद्यापीठ एलमनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर रितेश ने हमसे एक पॉलिसी करवाया, उससे मेरे को 100 रुपीज आया माई अर्निंग, so from there I will give 25 rupees to the alumni. और हम कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से काम नहीं करते हैं. आई एम ओपन टू ऑलमोस्ट ऑल द इंश्योरेंस कंपनी, बी इट इन हेल्थ इंश्योरेंस, बी इट इन जनरल इंश्योरेंस, और बी इट इन लाइफ इंश्योरेंस. एज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रितेश, उनका मम्मी का एक हेल्थ इंश्योरेंस था, अभी भी है, सॉरी, तो उसके बारे में हमसे बात किया. आई टोल्ड हिम कि यू सेंड मी द थिंग, लेट मी चेक आउट, इफ आई फील लाइक इट इज ओके, देन आई वोंट सजेस्ट टू ट्रांसफर दैट पॉलिसी टू एनी अदर कंपनी और समथिंग लाइक दैट. तो यही मेरे को कहना है कि आप लोग का पास बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स बहुत सारे प्रोडक्ट लेके बात करते हैं, आप लोग भी फेस करते हैं.
लेकिन अगर आप लोग मेरे से वो पॉलिसी करवाओगे, एक बात तो यही है कि हम लोग सब एक साथ हैं, जितना सर्विसेज जैसे भी हो, इट्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स आई एम सेइंग यू, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। जो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। हम लोग क्या होता है ना, ऐसा बहुत सारे को हम देखे हैं कि बहुत सारा पॉलिसी है और उसको उतना कुछ पता नहीं है। आज ये आके बोल रहा है एक पॉलिसी करते रहे, कल वो आके बोल रहा है एक पॉलिसी कर रहे, परसों और एक बंदा आके बोलता है उसको भी एक पॉलिसी कर देता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइज वे से वो थिंग्स नहीं रहता है। पूछते हैं तो यही बताया कि हमको उतना पता नहीं है, आई हैव टू गो थ्रू द पॉलिसी, उतना हमको नाम भी पता नहीं है। हमको आके बोला करवाने के लिए, हम तब सुने थे, अच्छा लगा था, हम कर दिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उतना हमको इन डिटेल्स पता नहीं है। सो एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड यू विल गेट दैट सर्विस। एंड सेकेंडली, आज आप एक पॉलिसी बाहर करवाते हो, उस पॉलिसी का एक कमीशन जनरेट होता है, वो कमीशन जिससे करवाते हो वही एंजॉय करता है। यहाँ पे एटलीस्ट आप एक पॉलिसी करवाओगे टू बी रेस्ट एश्योर कि वहां से एक जो कमीशन आएगा उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम लोग का रामकृष्ण मिशन एलमनी में जाएगा। एंड आई थिंक दैट विल हेल्प लाइक एनीथिंग। तो दैट इज द थिंग व्हाट आई वांटेड टू से। आज हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके बात नहीं करेंगे। अगर इफ somebody is interested individually or if there is a group who wants to talk to me regarding any policy, I will provide that. Even I will provide the trainers of the particular companies also who will make you understand about the thing. So these are the services. You will rest assured you will get it from me. And ऐसे भी मेरा नहीं है कि आप ये पॉलिसी कीजिए, आप वो पॉलिसी कीजिए। इस कंपनी से जैसे आपका नीड जैसे रहेगा, इफ वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, देयर आर मेनी नीड्स ऑफ मेनी पीपल। आज किसी को अगर कुछ पॉलिसी करवाना है, उसका फ्यूचर को लेके, उसको लेके हम बात कर सकते हैं। उसका क्या जरूरत है ये अगर हमको जानने में आएगा, देन आई कैन सजेस्ट अ प्रोडक्ट टू हिम, रादर देन पहले ही एक प्रोडक्ट लेके किसी के पास चले गए, आप ये करवा लो, ये बहुत अच्छा है। हो सकता है हम बोल रहे कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसका वो नीड नहीं है। तो द थिंग इज, किसी का भी कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। वी कैन डिस्कस what you want actually from the investment, then I can suggest a product from any of the companies. हाँ, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाए तो आई यूज्ड टू वर्क विद मैक्स लाइफ, देन विद एचडीएफसी, देन विद टाटा, देन विद आईसीआईसीआई आल्सो। तो जिसका जिसका इंश्योरेंस में एक होता है कि ऐसा बोलते हैं कि कौन सा अच्छा इंश्योरेंस है। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस अच्छा इसी को बोला जा सकता है कि जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। तो हम कुछ टॉप कंपनीज को लेके ही काम करते हैं, ऐसा कि नहीं कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी हो उसका प्रोडक्ट ही हमको बेचना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम regarding any investment. I promise that I will give you best of the best services from my side. There will be a transparency also. ऐसा बाहर में बहुत कोई हम देखे हैं, कोई बंदा आके कुछ बोल के जाता है और बाद में कुछ दूसरा करवा देता है और उस आदमी को पता भी नहीं चलता है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा मेरे से, that I can promise you, and I'm sure you will get best of the best services from me. Now, if there is any question from your side, I'm willing to hear those. Thanks, Dada. There is a question from Manjeet Nath. He is from 1995 and he has also joined. Manjeet, how are you? I think okay, I will repeat his question, which I posted on the chat box. Which is the best health insurance policy to buy? Policy Bazaar is so confusing with so many companies and the caller executive is so irritating. Please guide.
जैसे हम बोले कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब अभी हेल्थ, अच्छा, इज इट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस ही वाज टॉकिंग? Yes, health insurance. Health, there are few companies like Niva Bupa, like HDFC Agro, like Star Health, कंपनी सब अच्छा है। एक्चुअली बात है कि इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय IRDA। IRDA के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता है। IRDA बोल देता था कि ये करना है। अब कोई कंपनी ये वाला दो फीचर्स को बैठा दिया, दूसरा कंपनी ये दो फीचर्स बैठा दिया, तीसरा कंपनी ये दो फीचर्स बैठा दिया। तो इसमें भी होता है कि व्हाट इज एक्चुअली योर नीड। इसमें भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करता है। प्रोडक्ट सब कंपनी में अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो वुड रिक्वेस्ट मंजीत टू गेट इन टच विथ मी, डेफिनेटली आई হ্যালো विल। সমুদ্রদা, সমুদ্রদা মঞ্জিত, হ্যাঁ কেমন আছেন? ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। দাদা কেমন আছে? দাদা ভালো আছে, দাদা ভালো আছে। সন্তোষিদা, তুই কোথায় এখন? মানে আমি আমি অ্যাকচুয়ালি মানে ফ্যামিলি ফ্লোটার্স যে ঘুরছি, ফ্যামিলি ফ্লোটার। হ্যাঁ, ওকে ওকে, আমার আমার মানে মেইন মানে কোয়েশ্চেনটা হলো, মানে পলিসিগুলো কেন রিজেক্ট কেন কেন হয়? রিজেকশন মানে ঠিক দেওয়ার সময় মানে রিজেকশন, হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য রিজেকশনস? देयर आर फ्यू कॉज, आई एम टेलिंग यू। एक तो होता है कि फैक्ट्स को सप्रेस किया जाता है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाट आई यूज्ड टू फेस, किसी के पास जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो एज आई यूज्ड टू आस्क हिम वेदर ही हैज गॉट एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और नो, तो बोलता है हाँ वो तो है। तो अगर वो है तो आपको उस बीमारी के लिए कोई कोई कंपनी में 3 साल, कोई कोई कंपनी में 4 साल तक उसका क्लेम नहीं मिलता है, उसके बाद से मिलता है। तो बोलता है कि तो बताने का जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे एडवाइजर्स जो है जस्ट टू ग्रैब द बिजनेस, बोलता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे, पॉलिसी तो कर लीजिए, प्रोटेक्शन तो आ जाएगा। बाद में क्या होता है, राइट नाउ अगर हम हॉस्पिटलाइज होंगे और अगर मेरा पॉलिसी इज फ्रॉम स्टार हेल्थ, तो मेरा एडमिशन का विद इन 24 आवर्स somebody from Star Health will visit my hospital and they will go through my history। और अगर उस समय वो देखा कि ये वाला कोई बीमारी जो है पॉलिसी में पहले उसका डिक्लेरेशन नहीं किया है, सपोज मेरा कार्डियक कुछ प्रॉब्लम आज हुआ, मेरा पॉलिसी आज मेरा नहीं है, बाद में हम पॉलिसी लिया छुपा दिए कार्डियक वाला चीज, और 5 साल बाद कुछ कार्डियक प्रॉब्लम आया, तो क्या होता है कि प्रीवियस हिस्ट्री तो उसमें आ जाता है, पूछता है डॉक्टर पहले कभी हुआ कि नहीं, ये सब कुछ उस समय दिमाग में नहीं रहता है। अगर वो अनकॉन्शियस भी है तो फैमिली पर्सन बोल देता है हाँ उसको तो ये हुआ था, ये दवाई लेता है, ये करता है, तो वो लोग भी नोट कर लेता है। और बाद में आकर इंश्योरेंस कंपनी जब चेक करता है तो फिर उसी समय ऐसा भी हुआ है, नॉट ओनली दैट क्लेम, पॉलिसी भी रिजेक्ट कर देता है। अच्छा समुद्रा, हेलो, हमको एक बात बोलिए ना, ये डायरेक्ट कंपनी से खरीदने अच्छा है या वही जो पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स, ये सब साइट है, ये सब से खरीदना अच्छा है? I would see, the one thing is, see, this is my business, okay? तो हम तो बोलेंगे कि हम ही लोग से खरीद लो, पॉलिसी बाजार से मत लो, बट दैट इज नॉट द थिंग। मेरे को एक चीज जो बोलना है, टिल डेट व्हाट आई फील वर्किंग इन दिस फील्ड, क्या होता है ना कि अगर कोई जान पहचान से तुम करवाओगे, एटलीस्ट इफ देयर इज एनी इशू यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिम। तो दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट। अब क्या है कि आज हम पॉलिसी बाजार में फोन किया है, कोई हमको बहुत अच्छे से पॉलिसी समझाया, लेकिन जो हमको पॉलिसी समझाया हमको पता नहीं है कि वो ठीक ठीक समझाया या गलत कुछ समझाया। दिस नंबर 1। तो मेरे को क्या है, उसको नेक्स्ट डे अगर उस पॉलिसी के बारे में किसी से बात करेंगे तो somebody else will get my call। और अभी हमको जो लगता है कि डायरेक्ट पॉलिसी बाजार इस सब से करने से एक ही नेगेटिविटी है कि क्लेम के समय ना, आज भी वी नीड द पर्सन हु हैज डन माय पॉलिसी, उस समय यू वोंट गेट एनीबॉडी। हाँ,
सी पॉलिसी बाजार से तुम आज एक पॉलिसी खरीद लिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 साल बाद अगर क्लेम हुआ, तुम किसको पकड़ोगे? तुम तो ओवर दी फोन एक क्या बोलते हैं, वो तो सब बीपीओ है ना। आज जो बंदा पॉलिसी बाजार में तुमको बोल के पॉलिसी बेच दिया, उसके साथ हो सकता है जिंदगी में तुम्हारा बात नहीं होगा। somebody else will take your call, right? तो उसमें एक प्रॉब्लम आ ही जाता है। So I would always request to get somebody through whom you can do the policy. ऐसे भी on the worst scenario I'm saying you, ऐसा भी बहुत मार्केट में है कि एडवाइजर अभी नहीं है, जो 2-3 साल के लिए इंश्योरेंस में काम करता है, आज आया काम करने के लिए 10, 15, 20 पॉलिसी बेच दिया और फिर वो 2-3 साल बाद दूसरा इंडस्ट्री में चला गया। अब तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा, अगर उसको पकड़ नहीं भी पाओगे, एटलीस्ट एक तो ऑफिस है, हर पॉलिसी में ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का ईमेल, ब्रांच मैनेजर को, तो किसी को ना किसी को तुमको तो मिलेगा जिसके साथ तुम बैठ के बात कर सकते हो कि मेरा पॉलिसी रिजेक्ट क्यों हुआ, कि व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स, एनीथिंग। लेकिन ये पॉलिसी बाजार हो या ये सब जो कंसेप्ट जो अभी है ना, बाद में तुमको किसी से बात करने मुश्किल होगा। कोई एडवाइजर अगर तुम्हारे साथ 8-10 साल रहेगा तो कुछ होगा तो तुम उससे बात कर पाओगे कि मेरा ये वेरी सिंपल, रितेश इज गोइंग टू टेक अ पॉलिसी फ्रॉम मी नाउ, इफ भगवान ना करे अगर ऐसा कोई जरूरत हो गया तो रितेश तो हमको बोलेगा, दादा ऐसा एडमिशन हुआ है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, आपको जितना जितना हेल्प करना है आप देखिए। तो आई विल लुक इनटू द मैटर। आज रितेश हो सकता है मेरा देवघर का मेरा भाई है, मेरा कुछ अलग ही प्यार है देवघर वासियों से, वो लेकिन मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट क्या आपको फोन करता है कि आप देखिए मेरा हॉस्पिटलाइज हो गए, इसको क्लेम का जरा देख लीजिएगा, अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ उसका आई एम आंसरेबल, एक्चुअली पर्सनली आई एम आंसरेबल टू माय क्लाइंट। so I think that is very beneficial. That is the thing. हम जो करते हैं यूजुअली, हमको अगर कोई बोलता है कि हेल्थ पॉलिसी करना है, फैमिली का हो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे किसी का मम्मी पापा किसी का भी हो, आई यूज्ड टू गिव देम एटलीस्ट 3-4 कंपनी का डिटेल्स, उसमें सब कुछ ब्रोशियर दे देते हैं, उसमें सब, नाउ यू पिक एंड चूज, हम जो देंगे सब अच्छा ही है। And to be very honest, all the insurance companies are good. I won't say this company is not good, that company is not good. That is not the thing. हाँ, claim settlement एक important thing है कि अगर स्टडी कर देंगे कौन सा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, let me go with that company, something like that. और ऊपर से भी हम दे देते हैं 3-4 कंपनी का कंपैरिजन दे देते हैं। Now you decide with whom you will go. I am with you. That is the thing. Manjit, I will also give you few details. ठीक है, I will get in touch with you. आप कौन सा कंपनी में हैं? मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी में नहीं हूँ, मैं बहुत सारा कंपनी मिला के ही काम करता हूँ, चाहे लाइफ में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे जनरल में हो, जो भी हो। आई एम एफिलिएटेड। हम एक बात बोलते हैं, जस्ट यू एडवाइस मी वन फैमिली, kindly I will do it. Just you advise me. A family, a self spouse and one kid. Husband, wife and a kid. Yes, husband, one wife and a kid of 1.5 years. Okay. Thanks, Manjit. Ritesh, you are saying something? Dada, what I was going to suggest, like Manjit has a query, and I'm sure there are other people who may have specific queries. What right. I can do, I can prepare a form, Google form, and circulate it among the Vidyapit Praktani with your details and give it introduction, your details. So they will fill up the form and we will forward it to you. So you take up those queries and sort it out. Correct. So in this way, we will also have a record of, who someone who has taken the service, what was the feedback, and if someone like
if I know you have done a good job, I recommend other Vidyapit Praktani, this is how it goes on. So everyone benefits from, and we have a central repository of whoever has taken the service from you. That was my that is my suggestion. We can do it through batch representatives. We have representatives from 71 onwards. So I would go a step further. Not only Praktani, but their family. If kids, if they would like, they can approach you. Sure. No, that will help. Exactly. तो बस और ज्यादा कुछ और बोलने का नहीं है. We all are grown up. पता हम लोग को भी है. Just to let you know, I am there with you all for any kind of service. As Ritesh just suggested, just get in touch with me. Definitely, I will help you out. Thank you. Any other questions from the audience, please? Rahul, I think we are done. Yep. So you will like to thanks. Yeah, no more questions. Okay. Thank you very much, Samudra. And Samrat is not here. He has left early as we had some guests through our bench. But thank you very much. It was very much enlightening. Many things, we got to know many things about this insurance sector in whole. Else, we used to get to know about only mostly about medical and health related insurance or vehicle related insurance. But good to know there are like many kinds of insurances and all. People can. Lastly, just to finish. Yeah. एक हम बोलने में भूल गए एक छोटा सा कि जैसा I was talking about the cancer policy. Let me let you know. हम सब सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा. हम तो सोचते ही है मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कैंसर नहीं होगा, मेरा कुछ ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा. बट प्रोटेक्शन जैसे हम बताएं कि आज के दिन में एक कैंसर पॉलिसी अगर हम ले लेते हैं फॉर प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, somebody in between 35 to 40 अगर 30 से 50 लाख का प्रोटेक्शन ले लेता है, ठीक है, टिल द एज ऑफ 75 और समथिंग लाइक दैट, उसका प्रीमियम साल भर आता है सिर्फ 15 से 20 हजार. I would say कि you all think that's minuscule compared to the treatment costs of cancer. That's very less. Yeah, and the thing is, in policy, there is a increase of 5 to 10% every year. So that is the thing. Yes. ठीक है. Okay. Good, valuable points added, Samudra. Within the last, but yes. So it was such an insightful session. Got to know many things. I think I did not have any questions, but it popped out in my mind. In our Vidyapit brethren and in fact, people we know, many people are entrepreneurs. So maybe people are in business, on product or services or something. So I'm sure we have insurance policies in place where they can secure their business things also. I'm sure there are. And if you can shed some light on it, the young entrepreneurs who are taking this kind of step in their life, not taking any job, because job में तो बहुत बार क्या होता है, when we go to job में तो medical policies and all दी जाती, but entrepreneurs, how to when someone start their new company to अपना HR policy बना. Yes, someone self-employed, अपना business को protect करने का भी, मान लो कुछ assets हैं and all, उसको insure करने का, and again the HR policies and inclusion of medical policies for their employees. तो होता ही है. Group insurance होता है. As I suggested to Vidyapit Praktanis also, बीच में एक इंश्योरेंस लेके बात हुआ था. तो अभी क्या है, कोविड के बाद ग्रुप टर्म इंश्योरेंस लगभग बंद ही कर दिया कंपनी. और उसके बदले में मेरा एक सोच आया था, हम बालाजी दा से बात किए थे कि आज स्टार्टिंग फ्रॉम 1971 टू से 70 to 20 50 years,
50 साल में एवरेज पर ईयर 50 स्टूडेंट्स, फिर भी हम लोग का 2500 भाई भैया छोटा भाई सब मिलाते हैं, तो व्हाई नॉट वी आर गेटिंग अ पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज. It takes around 150, maximum 150 rupees per lakh. So minimum, nothing. तो अगर एक एक का एलमनी से अगर इसका इनिशिएटिव लिया जा सकता है तो हमको तो लगता है बहुत अच्छा. कम से कम अगर 5 लाख का एक एक बंदे के लिए एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, it hardly takes 700 to 800 rupees. And I'm telling this including GST also. Okay. तो आई वुड रिकमेंड, ये हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए इसको लेके. जितना मेंबर्स है, एटलीस्ट जितना मेंबर्स है, उन सबको एलुमनी की तरफ से एक कम से कम 5 लाख का बेनिफिट देने से अच्छा है. Yes, yes. Very good proposal. As Devdeep was also टर्म mentioned. इंश्योरेंस जब बात हुआ था, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम तो बहुत ज्यादा आता था, करीब 10,000, 5,000, 3-4,000. दिस इज अ मैटर ऑफ ओनली 500-700 rupees, and yeah, it's good having a coverage of 5 lakhs, not bad. तो इसको लेके एक बार अगर Sure, we can इनिशिएटिव ले जाए तो अच्छा रहेगा. We'll definitely take this forward, and I'm glad that you're already in touch with Balaji Da. So we'll sure get in touch with you and Balaji Da and everyone coming together, and we can plan something. But good proposal. Thank you very much, Samudra Da, for this also. So Annual yeah, जनरल मीटिंग में इसको लेके बात करना चाहिए. Sure. It's a proposal from my side actually. Yes, definitely we can include that. Definitely. Okay, so thank you very much all the audience who was with us still, and thank you for your patience. And once again, last but not the least, I want to thank both the speakers, Samudra Da and Samrat Da, who has who both of them have given us lots of information on insurance and how things are to be done. And I'm sure there must be lots of queries regarding this field, but as Ritesh Da has suggested, we'll float a Google form where we can collect all the relevant questionnaires and sort them out or something. Okay, thank you Right. very much, everyone. Thank you. Really nice talking to you, everybody. Yes, thank you, Samudra. I'll just officially conclude the session here, and I'll stop recording. Thank you very much.